We have the discussion on an inspirational book, The Gallantry of War Widows by Ambreen Zaidi, and she'll be in conversation with Smita Singh. So I request both of you to please step up on the stage. About Ambreen Zaidi, she's a well-known author who writes for various national and international publications. Her debut novel, The Warrior Widows, is being widely acclaimed and appreciated. Being an army wife, she has been actively involved in the welfare of war widows and orphans through her organization, The Changemakers, where she and her team identify, mentor, and guide war widows, orphans, and people with needs. Now about our discussant, Ms. Smita Singh. She has been with the media for over 17 years and worked in the field of print media, book publishing and education, and has edited over 30 books. She has worked with eminent newspapers like the Times of India and also worked with magazines like Discover India. Currently, she's working on an exclusive biography of Sanjukta Panigadi, the world-renowned Odissi exponent, under the Raza Foundation Fellowship. Now, a small brief introduction about the book. The book, The Warrior Widows, is a tribute to the wives of the soldiers of the armed forces. Everyone knows the sacrifices a soldier has to make in terms of family life, personal comfort, and perpetual experience. But the sacrifices that the family and the wives of those soldiers make, those are mostly ignored most of the time. So when a soldier dies, the wife transients into a state called widowhood. And the book takes you into the world of struggles, stigmas, social taboos attached to these women, and they show how they rise and shine. Over to you, ladies. Hello, good afternoon. I would like to give a short intro before I start the discussion with Ambreen. We all know that in a society and in societies around the world, soldiers, veterans, martyrs are treated with a lot of respect. When a soldier sacrifices his life during the course of his duty, the media hype may last for a few days. Thereafter, the focus shifts to other TRP-related news and events. Eventually, the family is left to fend for itself. The death of a soldier causes psychological disorders to parents, widows, and children, leading to post-traumatic stress disorder of varying degree. The most vulnerable are the Veer Naris, as the war widows are called in the army, who are generally young. The majority of them hail from rural areas and may be less educated. The widows not only lose their husbands, unfortunately, they also lose their status and importance in their families. Also, the young widows face problems related to the legal rights of inheritance and ancestral property. They undergo challenges peculiar to patriarchal society with hardly any formal institutional structural system support to cater to emotional support of the Veer Naris. So, Ambreen took it on herself, being an army wife, to bring forth all these related challenges that these Veer Naris face. So now, Ambreen, it's up to you to introduce your book, and then I'll continue with the discussion. Why did you, think of writing this book? If we can start with that. Well, since the day I married my army officer husband, this was one topic which touched my heart very deeply. There are many other welfare issues in the army, but there was this event in Jodhpur. वहाँ पे we got to know कि एक गांव है जहाँ पे जो ये विधवाएं हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो विधवाएं हैं, उनको डिसोन कर दिया है फैमिलीज़ ने कि वो 90s and 80s, लेट 80s में थी और दे वर अ लायबिलिटी ऑन द फैमिली और इतना ज़्यादा पैसा नहीं था तो सबको डिसोन कर दिया था. तो द GOC ऑफ द एरिया ही गॉट टू नो अबाउट इट और उन्होंने एक कैंप, वेलफेयर कैंप लगाया और उन सबको बुलाया, बसेस एंड गाड़ियाँ भेज के उन लेडीज़ को बुलाया, सब कुछ. एंड ही अनाउंस्ड अ पेंशन ऑफ 500 रुपीज़ फ्रॉम हिज ओन फंड कि हम आपको 500 रुपये आपके उसको इसके लिए देंगे. सो द मोमेंट द फैमिलीज गॉट टू नो कि अरे अब तो माओ को पैसा मिलने लग रहा है,
आगे और मिलेगा. They all started getting them back home. उससे मुझे अफसोस हुआ कि it's all about money. माँ कुछ नहीं है. And being in the organization, you cannot speak so freely about these issues. So once my husband took a retirement from the army, that was when I actually started working on the book. I was writing, jotting down these stories, meeting ladies, but that was the time then when I could freely do it and freely write about it. And I must tell you, every book an army wife or an officer, if they're writing it, they have to go through the army headquarters. I did not do that because there are stories which shake you from within, and army would not have allowed me to do that. So I started my journey, and as I was about to end my book, I was almost 50,000 words towards the finish lines, and I was just there. And I started to request the publishers, send them the table of contents. Okay, this is my book. And I was like, soldiers pe hai, widows pe hai, everybody will come forward and take it. ये तो topic ऐसा है, because this is what we see in the TV. Desh Bhakti, patriotism. And believe me, all the top publishing houses refused. मैम कैसी बातें कर रहे हो, एक ही तो कहानी होगी ना, हस्बैंड मर गया, उसके बाद वाइफ ने कैसे ज़िंदगी चलाई. I was shocked. I could not write for 2 to 3 months कि यहाँ भी पैसा है. मतलब आपको नहीं पता, उस लेडी की बैटल तो उस दिन से शुरू होती है ना जब उसने अपना हस्बैंड खोया है. बच्चे, पेरेंट्स, इन-लॉज, प्लस we as a society are not kind to widows. It is still a stigma. और मतलब फिर that motivated me कि no, these stories need to come out. People need to know about these women, and I have to do the needful. I would like to talk about the cover. There's a crossed out war in red. What does it mean? Like, did you discuss it with the designer? Why did you get it done? This red mark here. So the red mark here on the war here in the cover is जैसे एक विधवा का सिंदूर नहीं हटा दिया जाता है. It is symbolic of that. And after that, how she becomes a warrior. So the book is Warrior Widows. That's the... You started an organization called the Change Makers. Did you come in touch with these brave widows through it? What does the organization do? See, I've been in touch with the widows since the day we got married. But since I was working in the corporate also, and I was handling CSR, and people knew that I belonged to the army family, so they always used to get for the CSR funds, कि ma'am, koi soldier ka family if they need help, or any project that needs help, we would like to help. So Change Makers is now a bridge between the donors and the beneficiaries. The orphans. And you had it? Yes, I had it. Of the 30 Veer Naris you've selected, whose story touched you the most and why? For me, there were 2, 3 that really touched me. There cannot be just one story which touched my heart, but I'll start briefly share few with you. One was of Saira Bano. She's from a village Dhanori of Rajasthan, and her husband was killed in World War II. उन लोगों की शादी ही हुई थी, निकाह हुआ था, और एकदम से उनके रेजिमेंट से कॉल आ गया था कि उन्हें फ़ौरन रिपोर्ट करना है. एंड ये दुल्हन बनी हुई वहाँ बेड पे बैठी हैं घूंघट के साथ, और ये यूनिफॉर्म में आते हैं ताज मोहम्मद साहब, और ये कहते हैं कि मुझे जाना होगा, यूनिट ने बुलाया है. घूंघट भी नहीं उठाया, ठीक है. और all she remembers till date is his black boots. उसके बाद वो वापस ही नहीं आए, उनकी डेथ हो गई उस वॉर में. This was one story which touched me.
और इस लेडी को मतलब शी वॉज यंग गर्ल 16-17 ईयर्स, इतने प्रपोजल्स आए, इतने लोगों ने बोला कि शादी कर लो शादी कर लो, शी डिड नॉट. इसने कहा कि नहीं, वो मेरी ज़िंदगी में कुछ पलों के लिए आए थे लेकिन किसी मकसद से आए थे, इसलिए मैं जो भी मेरी पेंशन है, जो कॉम्पनसेशन है, मैं अपने गांव की लड़कियों की पढ़ाई में लगाऊंगी. एंड शी डाइड 2 years बैक at the age of 102. This is one story which touched me. And another one is a Ruby letter Banu? written by Simran. Her father was killed in Kargil. And her mother then became an officer. She's a lieutenant colonel right now. I'm reading out a paragraph from her letter which she wrote. Simran, I was a very grumpy child, partly because I was very angry due to the circumstances we were in. I got angry when I saw other children disrespect and not value or even hate their fathers over the minutest of the inconvenience. They did not know what they had. They did not understand what I would never have. When my mom was posted in Srinagar, mother became an officer after that, I went to Army Public School with a lot of local school children. They made it a point to voice their hatred towards the army at every chance they got, which never made anything easy. All my life, I found myself spiraling with confusion about who to blame for this loss. I found myself angry at my father himself for being gone. I now know there's nothing any could have done to change the things. This is a letter by a young orphan girl whose father passed away in Kargil. This is another story, and now this girl is trying to write a book about her experiences. And one more story that I would like to share with you is there's something called territorial army in India. So I got to know through Brigadier Harcharan Singh, one story leads to another and other. So for this book I had to meet 72, 73 ladies, out of which only 30 could make it. So there's this lady, Ruby, in Srinagar. Her husband was in territorial army, posted in Kashmir. She had 3 sons. और घर में किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी. बड़ा बेटा, he was in class 12th. So वो बोला, माँ मैं जा रहा हूँ, एक ड्राइव लेके आता हूँ. He met with an accident. He was in the ICU, and after 15 days he passed away. So the husband came home, Lance Naik Mukhtar. He came home for the last rites, burial, सब कुछ के लिए. पूरा गांव जमा था वहाँ पे. The militants got to know about it. बच्चे का लाश रखा है, उन्होंने आके फादर को शूट कर दिया. वो लेडी कहती है, मैडम उस दिन मेरे घर से 2 लाशें निकली. हिला देती हैं आपको ये चीज़ें. और उसके बाद it took her 6 months to get over it. लेकिन उसके बाद she is the voice of so many ladies out there. बिकॉज कश्मीर में कुछ एक लॉ है, वो लोग शरिया लॉ कहते हैं, बट मुझे वो कहीं मिला नहीं है. मैंने काफ़ी क्लरिक्स और इस्लामिक स्कॉलर्स से बात की, तो उसमें ये है कि इफ़ द सन पासेस अवे, द फादर, द ग्रैंड फादर ऑफ दीज चिल्ड्रन is not responsible for their upkeep and मतलब he can throw them out of the house. उस चक्कर में क्या है, most of the ladies, most of the soldiers, Kashmiri soldiers who die, they are disowned by their families. तो कुछ होती है ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, गवर्नमेंट टेक्स देम अप कि इनको तोड़ के कुछ और अच्छा बनाएंगे. उन डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स में इनको एक एक कमरे में रखा जा रहा है. और ये जो रूबी है, जिसका हस्बैंड और बेटा एक ही दिन शहीद हुए, वो अब उनकी वॉइस बन गई है. वो अब उनके इश्यूज़ ले जाके मैजिस्ट्रेट हो, कोई कहती है मैडम जो खोना था वो तो खो दिया ना, वो तो वापस नहीं आ सकते, इन लोगों को तो बचा सकती हो. So these are the inspirational stories which make you feel very small,
और उसके बाद एक दिन मुझसे मिली तो बोलती है कि कुछ था बहुत बड़ा इशू, किसी और लेडी का घर से रिलेटेड था, भाइयों वाइयों ने सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, इसको कुछ नहीं दिया था। सो ये गई, सैनिक भवन है श्रीनगर में, तो आई और बड़े खुश खुश ना एक्सेप्टेंस हो गया इसकी तरफ, वो हो गया, बहुत सालों से चल रहा था केस। तो कह रही है मैम पता है सैनिक भवन जाती हूँ ना श्रीनगर में, लगता है मैं क्या आ गई हूँ, क्योंकि सब ने छोड़ दिया है। सो दीज आर द स्टोरीज, हमें पता ही नहीं होती हैं कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है। So what do you think is the biggest challenge for a warrior widow? You met so many of them, so सोसाइटी, हम लोग, हमारा माइंडसेट, दैट हैज़ टू चेंज। मेरी बुक में एक आरती दुबे का है, एंड हर हस्बैंड डाइड इन अ एयर क्रैश, और बुरा हाल था, बच्चे छोटे थे, और जल्दी जल्दी बस उसको बोला कि पैक योर बैग्स एंड गो। तो उसके मतलब उसको इतना भी नहीं वेट करने दे रहे थे कि उसके फादर या ब्रदर इन लॉ कोई आए और लेके जाए। तो पीपल वर कमिंग हर टू पे कंडोलेंसेस। गांव में जब सब कुछ हुआ तो एक दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि ठीक है विडो हो गई, पैसा बहुत मिलेगा, ये सब होगा। तो एक लेडी उसको बोलती है कि अरे किस बात की चिंता कर रही हो, बहुत पैसा मिलेगा तुम्हें, ज़मीन मिलेगी, पेट्रोल पंप मिलेगा। उसने कहा सुनो, ज़मीन, पेट्रोल पंप, पैसा तुम रख लो, अपना हस्बैंड मुझे दे दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ही हैं। अगर हम उन्हें खुले हाथों से एक्सेप्ट कर लें तो फिर क्या बात है। So what do you think is the biggest lesson that you learned as a writer of these stories? I've not learned a lesson, but yes, I think I've become a better person. Because जब ये ladies इतना सब कुछ सह के इतना कुछ कर सकती हैं, तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। What do you think we as citizens how can we contribute to the cause of war widows and war orphans? What can we do? This is a very important question because there are a lot of NGOs who work for war widows, ex-servicemen and war orphans. But उससे बेहतर ये होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में सैनिक ज़िला कल्याण बोर्ड होता है। सैनिक ज़िला कल्याण बोर्ड होता है, वहाँ पे सबका डेटा होता है। आप वहाँ जाइए, आपको जिसका जो इशू लगता है कि इट नीड्स अटेंशन, बिकॉज सैनिक ज़िला कल्याण बोर्ड अगेन इज़ अ गवर्नमेंट, वो तो उन लोग को जो आ गया ठीक है कर दिया, हो गई सॉल्व, प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर हम जाके वहाँ पे आइडेंटिफाई करें लोगों को खुद अपने इनिशिएटिव पे, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। Okay. What do you think needs to be done for them? You know, like, what do you think is still lacking? You've told us what we can do as citizens, but from the government side, from organizations, what? I think awareness. Lack of awareness is what is needed because Ayodhya ko I would call my Karam Bhumi because वहाँ पे मैं मिली थी, I had gone for a session there, और वहाँ पे मुझे एक भागीरथी देवी मिली थी। And this session was organized by a very renowned gentleman, and वो ऐसी ऐसी cities में जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वर्कशॉप्स करते थे बच्चों के लिए। वहाँ से बॉम्बे से लोग आते थे, वर्कशॉप्स कराते थे कि बेटा तुम कैसे 500 रुपए के नोट से यू कैन स्टार्ट अर्निंग। तो ही टोल्ड मी, अमरीन व्हाई डोंट वी जॉइन हैंड्स एंड डू द वर्क टुगेदर। तो मैंने कहा मेरा तो विडोज़ का है, तो कहने लगी यू विडोज़ कैन ऑल्सो अर्न मनी, है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और तुम देखो फैज़ाबाद अयोध्या में कौन कौन लेडीज़ हैं, क्या है। तो वहाँ मुझे पता चला 22 हैं वॉर विडोज़। और ये जो भागीरथी देवी थी, इनके हस्बैंड इंडो चाइना वॉर में ही पास्ड अवे, हर सन वॉज 6 months ओल्ड, और इनको 2 रुपया पेंशन मिलता था और 300 रुपये पूरा टोटल अब तक आज तक का कॉम्पनसेशन था। गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड अ बिग पीस ऑफ लैंड फॉर हर,
सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया था, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सब कुछ अप्रूव हो गया था। लेकिन जो वो विलेज का प्रधान था वो बदमाश था। वो नहीं चाहता था कि मुझसे ज़्यादा या मेरे बराबर किसी के पास ज़मीन हो, तो उनको आज तक वो ज़मीन नहीं मिली। इस किताब से अगर इसकी कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस है तो मैं ये मानूंगी कि किसी ने पढ़ी कहीं लखनऊ में, और फिर मीडिया पहुंचा उनके घर, और योगी जी की गवर्नमेंट ने किसी ने पढ़ा एंड ही टुक अप दिस इशू। वहाँ से डायरेक्टिव्स गए अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस इशू को रिजॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। ये 62 से अब तक चला आ रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। सो अवेयरनेस इज़ वन मेजर इशू विच वी नीड टू टैकल। You've dedicated one chapter to villages of warriors. हाँ, So can you tell us about them a bit? there are many villages of warriors, but वही चीज़ होती है ना, अवेयरनेस वाली बात हो जाती है। तो वन थिंग लेड टू द अदर। एक लेडी के पास ट्रैवल किया तो उन्होंने किसी और के बारे में बताया। तो राजस्थान में मैं आपको बताती हूँ, ये विलेज धनौरी, जहाँ की वो थी सायरा बानो, जिन्होंने कभी अपने हस्बैंड की शक्ल नहीं देखी थी, तो वहाँ पे अभी एट प्रेजेंट 250 तो सर्विंग सोल्जर्स हैं और 300 रिटायर्ड हैं, 15 किल्ड इन एक्शन हैं, और 3 जो हैं वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की और बुरी हालत है, बिकॉज ना इंडिया ना पाकिस्तान, दोनों गवर्नमेंट्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उनकी भी स्टोरी है, मिसेस वराइज की स्टोरी है। उनके हस्बैंड अभी तक पाकिस्तान में हैं, उन्हें न्यूज़ मिलती रहती है इधर उधर से कि वो हैं। पहले जब यंग थे 1971 में उन्हें लिया गया था, तो बैडमिंटन वगैरह किसी ने खेलते हुए देखा था, किसी ने कैरम वो करते, बट अभी तक नहीं। बट बेटी लगी हुई है, अभी तक उसने पीछा नहीं छोड़ा है कि नहीं, कैसे भी हो, मुझे पता है मेरे पापा ज़िंदा हैं, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने पापा को लेके आऊँगी। These are the stories. What is your message for the world or society at large? मेरा कोई मैसेज नहीं है, मेरा बस ये है कि होल्ड द हैंड्स ऑफ दीज लेडीज़, ऑफ दीज चिल्ड्रन, होल्ड देयर हार्ट्स। एज इट इज़ इतना ज़्यादा ट्रॉमा फेस कर चुकी हैं वो, ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, लोगों ने, फैमिली वालों ने, अपनों ने घर से निकाल दिया है। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है, और मिलेगा, अगर आप ज़िला सैनिक कल्याण बोर्ड जाएंगे, यू विल फाइंड दीज केसेस। बस हाथ थाम लीजिए, बहुतों की ज़िंदगी हम बदल सकते हैं, हमारे हाथ में है। What do you plan to do next? Like after this book, anything more for these warriors? This is just a beginning. और इसके बाद, yes, I've started working on my another book, which is on disabled soldiers. So that again is one area which very many people don't know about it. कि आधा बॉडी कट जाता है तो जाते कहाँ हो, होता क्या है। So there's one very beautiful story कि एक है संजीव, उनका कारगिल वॉर में बॉम्ब ब्लास्ट में, लैंड माइन ब्लास्ट में आधा बॉडी चला गया था। पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुआ था और क्या, फिर लैंड माइन ब्लास्ट हुआ था, एंड ही डिड नॉट टेल इट टू एनीवन। और इसको लग रहा था ये ख़त्म हो जाएगा, इवन द डॉक्टर्स फेल्ट के चला जाएगा। काफ़ी दिन उसको श्रीनगर में रखा गया, काफ़ी दिन उसे चंडीगढ़ हॉस्पिटल में रखा गया, और हफ्ते में एक बार फ़ोन कॉल अलाउड था। तो ये अपने घर वालों में यही बोलता था कि हाँ अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी 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 बहुत ज़्यादा काम है, आपको पता नहीं है फ़ौज में कैसे होता है। एंड ही डिड नॉट टेल एनीवन। फिर उसकी माँ को कुछ लगा, एंड समथिंग शी फेल्ट इनसाइड, एंड वो बोली मुझे मिलना है तुझसे। तो वो लोग आए, मिले विले, देखा, एंड दे एक्सेप्टेड। और वो अकेला बच्चा था, 2 बहनें थी उसकी। और अब हमारे यहाँ एक चीज़ और होती है, वंश चलाना है, कुछ भी हो वंश तो चलाना ही है। अब वो लोग जो थे उसके पीछे पड़ गए कि शादी कर। वो कह रहा है मेरी आधी बॉडी नहीं है, मैं किसी और की ज़िंदगी कैसे ख़राब करूं। तो बोला नहीं,
काफ़ी लोगों से पेरेंट्स ने पहले ही बात कर रखी थी, काफ़ी लोगों ने मना कर दिया था, काफ़ी वो हुआ. फिर एक लड़की थी, वहाँ गया प्रपोज़ल, वहाँ भी सबने घर वालों ने मना कर दिया, मिलने ही नहीं दिया. उस लड़की को जब पता चला सुधा कैसे ऐसे है, तो उसने कहा मैं मिलना चाहती हूँ. तो ये लोग आए सब लोग, तो इसने कहा कि मैम मैंने ना सुधा को बोला कि अपने साथ माँ को या बहन को या भाभी को जिसको लाना ले आ तू कमरे में, मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि तू किस किस दलदल में फंसने वाली है. बच्ची है, जस्ट एक बार देख ले. एंड ही टुक ऑफ हिज, वो लकड़ी का था क्योंकि उसके डैमेज इतना ज़्यादा हो गया था कि आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में भी उसका कुछ कर नहीं पाए, कुछ लगा नहीं पाए उसके. तो ही जस्ट वेयर्स अ जीन्स लाइक दैट एंड ये, एंड ही शोड हर दिस. सुधा कहती है कि मैम उसके बाद मैं और ज़्यादा अपने डिसीजन में पक्की हो गई कि इसने अपनी आधी बॉडी दी है देश को, मैं अपनी ज़िंदगी इसको नहीं दे सकती. ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, मतलब द हीरोज आर अमंगस्ट अस. और मैं अभी मिली हूँ, लास्ट वीक दे वर एट माई होम एंड वेरी प्रिटी लुकिंग गर्ल. अच्छा, कंपैशनेट ग्राउंड्स पे ये हुआ कि संजीव को 10 इयर्स बरेली में मिल गई पोस्टिंग. 10 इयर्स में सुधा ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली एंड नाउ शी इज़ वर्किंग विद आर्मी मेडिकल कॉलेज. अमेजिंग. So these are all very inspiring stories. Awareness चाहिए. One thing that I read in your book was there's a difference between, soldiers who die during action and during normal course of work. So the widows are even, treated differently. Is that so? No, widows are not treated differently. The compensation is different. है ना? So, but they face the same lack, right? That shouldn't be different. That's what I feel. That the is family one- is suffering. That is one point of concern. But then what the army says is, if a soldier is on chutti, he's on a holiday, वो कहीं जा रहा है, गाड़ी में कहीं उसका accident हो गया, how is the army responsible? There's one story about this bridge, getting blown away, and then that person dies. So there's a story of this widow as well in your thing. हाँ, that is Leh. Leh. हाँ, Yes. she's a battle casualty. उसको पूरा Compensation मिल गया उसको है. पूरा Compound. उसको कुछ नहीं पता क्या हुआ है. हाँ, I know. You know Ladakhi people how they are. So I asked her, Sering, बताओ उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था. मेम साहब जी फ्लड आया था, मर गया. मतलब the language. She doesn't know anything. All the information I got was from the army headquarters. From the army. Yeah. So yeah, I would now invite our audience to ask Ambreen if there's anything you would like to say. Anyone with any question, please raise your hands. Yeah. Yes, ma'am, just a second, we're getting the mic. So, Ambreen, I don't know what the cause of the delay in your session was. Whatever it was, I'm very glad about it because I wasn't there in the morning. So, I'm glad I heard this. I was very keen to hear this. I want to know, and it's given me goosebumps, some of the things you've said. I want to know, when you talk to so many women, do they and how do they cope, not necessarily about what happens after the husband dies, but during the process. I'm married into an army family. I've watched certain things. But how do they live with that everyday fear, of anything happening, especially when there are active wars? Some of them have lived through it. Have you, of course, I know yourself, have been, an army officer's wife, and he's just retired. So I want to know that part of it. Ma'am, it's very tough. And women are still very hesitant
to go for counseling, to seek help. और अब ये है कि मैं अगर पड़ोस में भी बैठ के किसी से बात करने लगूं तो कुछ दिन बाद वो भी मुझे अवॉइड करने लगेंगी कि ये तो यही बातें करती रहती है, इसका तो यही चलता है. यू नो, पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग. ये होता है कि फंक्शंस में नहीं बुलाई जाती हैं कि भाई तुम विधवा हो, बैड लक, स्टिग्मा है, ये है, वो है. दैट इज़ वन थिंग आई नीड इज़ कि एक प्रॉपर काउंसलिंग बच्चों की भी और इन लेडीज़ की भी होनी चाहिए, और प्लस द फैमिलीज़, राइट, बिकॉज यू कैन नॉट डिसोन. उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, राइट? We can take one more question. नहीं, वो सिर्फ पेपर वर्क करते हैं. आपका कोई इशू है उसमें भी साल लग जाते हैं, बट ये है कि आपको एटलीस्ट इश्यूज पता चल जाते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है. दैट इज़ व्हाट. Hello, Ambreen. I'm Asma Rizwan. हाँ. You've talked about that there's not much awareness, and even I've realized that, you know, how do you raise this awareness in a modern world? Do you think these women or Army Association, Wives Association can have a social media handle where they can even crowdsource money for them when their kids gets married, or somebody can sponsor them? If they have a social media presence, do you think that will bring out the awareness? Is there any army officer here in the audience? We will never ask for money. May I speak? Yes, please. So, ladies and gentlemen, I am Brigadier Sanjay Agarwal. I have been into all the dirty places that the army takes you, every one of them. I have been declared dead couple of times. I have been shot up. What the question earlier was, how does the lady live? 1982 I was married. सीधी बात थी, शादी मेरी कुमाऊं रेजिमेंट से हुई है, तुम मेरी दूसरी बीबी हो. एंड टीयर्स, ऐसे ही आंसू फांसू रहने दो अपने. जब पलटन बुलाएगी, वो मेरी पहली जान है, तुम दूसरी हो. Pretty harsh. Next, पोस्ट कार्ड इनलैंड का ज़माना था. There was no this telephone and this magic instrument of a mobile. Simple answer, no news is good news. Because army is very good. The moment you get hit, they send a telegram. 5-7 दिन में पहुंच जाता है telegram. If you die, somebody will ring up and somebody will come and tell you within 2 days you'll know your husband has died. So I said, problem क्या है तुम्हें? No news is good news. Today when I look back, what torture I have given to my wife. And she took it. More brave than us who face enemy are these wives of army, of military personnel. Third, Thank you, sir. how do they take it? I'll give you an example from 1987. Mrs. Niharika Naidu is waving me on. General Naidu is here in the audience. He's been the Vice Chief of the Indian Army. Third, 1987, Operation Brass Tacks. I couldn't go on a posting to instructor Indian Military Academy, लड़ाई लग गई है. आलम ये था जनाब कि लेडीज़ अपने फर्स्ट फ्लोर वालों देखते रहते कि कोई काली गाड़ी एम्बेसडर कार, अगर एम्बेसडर कार कॉलोनी में घुस गई, सारी लेडीज़ कहाँ जा रही है, मेरे ब्लॉक में तो नहीं आ रही है, इसका मतलब एडम कमांडेंट आया है बुरी खबर लेके. एक ऑफिसर जो पीछे छूटता है वो आया है बुरी खबर लेके. और हर तीसरे चौथे दिन सीओ साहब की बीवी के घर एक टेलीफोन होता था. तो सीओ साहब के फ़ोन से, जनरल नायडू इज स्माइलिंग बिकॉज ही इज लिविंग बैक, ही वॉज आवर BM अगेन ट्वाइस in 1983 in Crew and thereafter in later I think in Alwar as well. तो 3-4 दिन में एक बार, हाँ तुम ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ, बच्चे ठीक हैं, चलो तुम अपना ध्यान रखना, अच्छा बेटा बाय बाय. इतना कह के अगले 3 दिन वो महिला जीती है. ये हाल था और आज भी the trauma is the same. And what ma'am is talking about, this awareness and what we can do, this is it. They are braver than us. अरे हम तो गोली खा के मर जाएंगे, उसका क्या होगा? 1984, I was on leave. Unknown to me, my wife had conceived.
January, February. My child was born in October 1984. खबर आती है पलटन से, come immediately and don't get family. पहला जवाब, अरे चिट्ठी फाड़ के फेंक दो यार, हम तो वाइफ लेके जाएंगे. नहीं यार, अब आया है, पता नहीं क्या है. And into Siachen we went. And by letter I come to know, you'll be happy to know that there's good news on the way. How do I tell her that where I am going and what is going to happen, I don't know. So thank you, ma'am, for raising awareness. I hope I have added to this thing. Thank you, sir. Thank you so Like much, to ma'am. conclude, Bree? Yeah. At the end, I would like to say the army is doing a lot of work for the welfare of these Veer Naris, but there's a definite requirement that our local NGO citizens also play their role by visiting these families and express gratitude of the nation for the sacrifices made by them. They will not come to us, for pity or anything. We have to reach out. That's what I See- got from this. See, it's as simple as that. We don't want special treatment. All we want is a fair treatment. That is it. And I must say, a big part is also played by our senior ladies in the regiments, in the corps, everywhere. They groom us in a way that we are ready for any eventuality. When the phone rings, we know. When the husband is at, in some operation, I know that senior lady is awake. मैं उसकी बच्ची बन जाती हूँ. They take such good care of us. And this comes to us, and then when we go to that rank, that place, we do the same with others. So, as when they say, army is a one big family, we definitely are. But then, civilians also have to play their part. Because these widows, these kids are living amongst us. Support them, hold their hands, and make yourself proud. Thank you so Thank you much, so ma'am, for introducing us to this world of heartwarming yet inspirational stories. We are thankful to you so much. Thanks, Peter. And now I would like to request Brigadier Sanjay Agrawal, the founder member of the Society for Culture and Environment, to give away the mementos to our ladies. Can we please have a big round of applause, everyone? I have been doing this job for the last 4 years, but this is one of the sessions which I will not forget. Thank you, Ambreen Zaidi, ma'am. This is a painting by the present, the one lady who won Padma Shri, and she is painted, Bhuri Bai, and she's painted the Bharat Bhavan, and it's a beautiful painting, as you all can see, the tribal art that she is portrayed. Thank you, ma'am. Thank you, sir.